TGS. Next, the third step, the client will send the is not a key. The message to the, send the ticket of TGS to the client. Sorry. Right, what are the elements of ticket of TGS? So, the ticket of TGS consists of ID of client, address of client, timestamp. Right? In the third step, again, the client will send the ticket of TGS to ticket granting service. So here, the ID of server appended with ticket of TGS, which is generated by the authentication server, and authenticator. So here the authenticator consists of ID of client, address of client, ID of TGS. Sorry, and also timestamp. Now, ticket of TGS, as we have discussed, so this is the ticket of TGS, and everything will be encrypted by using, and also session key, right? So, and also the secret key of TGS. This will be set. Next,
Now TGS will generate the server ticket and sends back to the client. So what are the elements? ID of server, a simple ticket of server along with ID of client. In the fifth step, C will send the ticket of server. So what is the ticket of server? Ticket of server consists of a secret key which is shared between client and server, appended with ID of client, appended with ID of server, appended with timestamp, and everything will be encrypted by using the secret key which is shared among the TGS and server, which is shared among TGS and server. So the client cannot decrypt this ticket, so client will automatically sends the ticket of V along with the authenticator to the server. So here what are the elements of this authenticator? So elements of this authenticator are again ID of C, address of client, ID of server and timestamp. All this will be in the authenticator. And now here the authentication process has been done in these 4 steps. So authentication server and the TGS have been authenticated to the client so that the server will communicate with the client. Now the client should be, the server should be authenticated by the client. So in the 6th step, the server will send back to the client the timestamp which is sent in this message is encrypted by using the secret key which is shared among server and client. Right? So the timestamp which has been sent by the client will be incremented and sent back to the client by encrypting by using the secret key which is shared among the client and server. So this is actually happens in this campus. So hope you understood these 6 steps. So once again I will show you the messages so that there will be no confusion. See. So the first step, the client will send the request and the ticket of TGS to the authentication server. So authentication server will get the client password from the database and again decrypt the message and generates the ticket of TGS and send back to the client. Now in the third step, the client will
authentication will be started. So private key and a public key forms. We have seen the certificate authority. Key will be two keys in different ways. So one way is applying the Kerberos concept, implementing the Kerberos concept, so which we have seen in the earlier session. And one more thing is the X.509 certificates. One way to mutually authenticate is by using this X.509 certificates. So we know that there will be two keys, private key and a public key, forms a pair. So public and private forms a pair, right? If one key is used in encryption, the other key of same pair should be used in decryption, right? So every user will be having their own public key and private key. As we know, we have to, this public key is open for all the users in the network, and private key will be not shareable, right? This is a public access. Public access. So in order to communicate each other, every user should know the public key of other users. So we have to maintain all these public keys. So in the earlier sessions we have seen how to maintain all these public keys. So in that we have seen the certificate authority. The certificate authority is one of the options to maintain all these certificates, public keys. Now let us know what about the certification authority. The certificate authority is one of the options to maintain all these certificate, public keys. Now let us know what about the certification authority. Certification authority. So certification authority is a trusted third party. It's a trusted third party, right? And it is responsible for sharing the public keys, right? So this will not generate the public key. So this certification authority is not responsible to generate the public keys. Not responsible to generate public keys, but it is responsible to provide an accessible location of these public keys. It provides easy way access this public keys and for authentication. So as I said that this is a trusted third party, so all the users should be having a trust on this certificate authority. And one more thing, it is not responsible to generate the public keys, but that means this certification authority will not generate the public keys, but it will provide an access to the the easy way to access this public key and for mutual authentication, right? Then so how the certification authority will be providing this access to the public key and how it is provided the authentication for all the users. So this certification authority will generate a signature. Generates a signature using the private key. What is meant by signature? So encryption using the private key of the user, sender. That we call it as a signature, right? Using private key in encryption process. So as usual, encryption process will be done on the sender side. So sender's private key is used for encrypting the data, that we call it as a signature. So this certification authority will generate a signature. So for which this signature will be generated? This signature will be generated for user public key and user identity. For both the things, this certification authority will provide the signature, right? So let us see the process. User, so for encrypting the data, that we call it as a signature. So this certification authority will generate a signature. So for which this signature will be generated? This signature will be generated for user public key and user identity. For both the things, this certification authority will provide the signature, right? So let us see the process. Both the user unsigned. So for this, the certificate authorities for a private key.
encrypted by using private key, right? Sorry. And we will get the encrypted format, the encrypted hash code. So this is and this one. That means user public key plus user hash code encrypted. This we call it as a private key. So once again I am saying this certification authority is not responsible to generate the public keys, but it is responsible to provide a signature for the existing public key. So that means we are providing the authentication, right? So by decrypting this process, we'll get the hash code, and again applying the same hash algorithms on this one, we will get the hash code, and both the hash codes will be compared. So if there is a matching with both the hash codes, that means it is a authenticated process. Certificate, right? One to decrypt the certificates. It will give an unique serial number for each and every certificate. Let us see the fields available in this certificate. The first one is version. So every certificate will be having the different versions. So this version gives which version is available for this certificate. So here there are three versions. Versions can be 1, 2 and 3. So the difference between these versions are fields. So let us see. Once we will write all the fields so that we will differentiate these versions. What are the fields available in version 1? What are the fields available in version 2? What are the fields available in version 3? Next, give an unique serial number for each and every certificate. So for every user, one certificate, right? So the version can be key information. Version 1 till this one, right? Till the subject public key information. Next, the version 2 till this one, and the version 3 right? So version 1 ends with the subject public key info, and if our certificate consists of these two fields, issuer unique identity and subject unique identity, this is a version 2. And if our certificate consists of the extension and the signature field, that is version 3. So the version can be 1, 2 and 3, the serial number, unique identity, algorithm. So this is for, it specifies the algorithm
So this certificate the signification is we have encrypted by using the certification. Hello friends, welcome back to our channel. In today's session, let's have a look on the one of the important concept, that is authentication applications in network security. Authentication application. So what is meant by authentication? Public access. So in order to communicate each other, every user should know the public key of other users. So we have to maintain all these public and using the private key of the user sender, access to the public key, and how it is provided the authentication for all the users. So this certification other key will generate a signature. Generates a signature. What is meant by signature? So encryption using the private key of the user sender, that we call it as a signature, right? User identity. So sender's private key is used for encrypting the data, that we call it as a signature. So this certification authority will generate so encryption using the private key of the user sender, that we call it as a signature, right? Using private key. It will provide user identity. The combination of both the user public key and user identity. With this we call it as unsigned certificate. So this is not a signature, we are not adding the signature. So for this we are applying some hash algorithms. So this hash code is encrypted. Sorry. So this is, and this will user public key plus user ID, and we will who this public key and the user identity will be authenticated, right? So once again I am saying this certification authority is not responsible to generate the public keys, but it is responsible to provide a signature for the existing public key. So that means we are providing the authentication, right? So by decrypting this process, we'll get the hash code, and again applying the same hash algorithms on this one, we will get the hash code, and both the hash codes will be compared. So if there is a matching with both the hash codes, that means it is a authenticated process. That is authenticated. That user public key is authenticated. Certificate as well as the encrypted hash code. Call it as authenticated. The user is authenticated, right? So this we call it as a certificate. Certificate. A certificate consists of the user public key plus user identity as well as the encrypted hash code. So this is the signed certificate. So this is called certificate signed.
certificate signed. So this is the process how this certificate is generated, right? Now let us see what are the parameters for the certificates. And here the X.509 is one of the certification directories, right? So this certification directory is responsible to provide these certificates in a single place, that means in a single directory, so that every user can access the certificates from that particular directory. And in order to authenticate the user, one user have to decrypt this one and calculate the hash code and compare the both the decrypted and the calculated hash codes. So like this, the user will be authenticated, right? So once these certificates are generated, all the certificates will be placed in one directory called some certification directory or public key directory. Next, let us see what are the fields available in a directory, certificate. So this X.509 is one of such certification directory which generates the certificates, right? See, X.509 certificate. Let us see the fields available in this certificate. The first one is version. So every certificate will be having the different versions. So this version gives which version is available for this certificate. So here there are three versions. Versions can be 1, 2, and a 3. So the difference between these versions are fields. So let us see. Once we will write all the fields so that we will differentiate these versions. What are the fields available in version 1? What are the fields available in version 2? What are the fields available in version 3? Next, serial number. Versions. Different certificate. Version certification directory, which generates the certificates, right? See, X.509 certificate. Let us see the fields available in this certificate. The first one is. Let us see the fields available in this certificate. The first one is. Let us see the fields available in this certificate. The first one is version. So every certificate will be having the different versions. So this version gives which version is available for this certificate. So here there are three versions. Versions can be 1, 2, and a 3. So the difference between these versions are fields. So let us see. Once we will write all the fields so that we will differentiate these versions. What are the fields available in serial number? So whatever the certificate generated by this certification authority, it will be generated along with that particular certificate, right? So this is a unique serial number. Next, algorithm along with the parameters.
So this algorithm will give the public, the signature algorithm, right? So it gives the algorithm which is used for generating the signature. Generally we have seen the RSA algorithm along with the DSS approach, right? For generating the signature, DSS approach we have seen with the help of RSA, right? So the same algorithm can be applied here. So this field implements, this field represents the algorithm which is used to generate the signature. So that we call it as a digital signature, right? Next. Issuer name. Here the issuer name is nothing but who will issue these certificates, who issued these certificates. So obviously the certification authority name is a issuer name. So the certification authority which issues these certificates is itself is a. Next. Of this certificate. So every certificate is having the validity. So it gives the validity of this certificate. So every certificate is having the validity. So when it must be used and till when it must be used. So not before, not after. It will give 2 dates. So it shows the period of validity of this particular certificate. So from when and to when it must be used. Next. Username. So for which this subject name. This subject name is the username. So for which this certificate is issued, right? Public key of user. Subject public key info. That means it consists of the public key of user along with the identity, user identity. So both will be in this subject public key info. This field. Similarly, there will be issuer unique identity. For every issuer, that means for every certification authority, there will be one unique identity, and that is this field. Similarly, there will be a unique identity for all the users in the network. So, extensions. So, if there are any extensions required, then we can involve these extensions for the further usage. And finally, signature. Right? So, whatever the signature we are creating for this certificate, that will be in this signature. So that means this signature consists of the encrypted hash code of all the remaining fields. So which we have seen earlier, right? And on the hash code we are getting the signature, that right till the subject public 509 certificate. So right, so these are the different fields of X.509 certificate. So the version can be version 1 till this one. Right, till the subject public key information. Next, the version 2. Till this one. And the version 3. Right. So version 1 ends with the subject public key info, and if our certificate consists of these 2 fields, issuer unique identity and subject unique identity, this is a version 2. And if our certificate consists of the extension and the signature field, that is version 3. So the version can be 1, 2 and 3, the serial number, unique identity, algorithm. So this is for, it specifies the algorithm used to use it for whatever the algorithm and issuer name. So this one, not before and not after. This is authority name, certification authority name. Not before and not after. This is period of validity when we have to use this certificate. Subject name is user name of user, extension, further purpose, and finally the signature, which is encrypted hash code of all above fields. Right? So this is the X.509 certificate. Right? That means after this the period of validity, the certificate will be expired. So before expiring the certificate, the revocation should be done. And let us stop here, and we will see the revocation of certificates in the next session. Right? So unless A doesn't, right? So in that, what are the fields?
available in this revocation list. So this revocation list consists of all the revoked certificates. All the revoked certificates will be available in this revocation list. Now, the first field, algorithm and parameters. So this gives what is the algorithm used to generate the signature. So which we have seen in the X.509 certificate. The same field is available in this revocation list. Next, issuer name. So as we have discussed in the previous session, issuer is a certification authority, which is a trusted third party who will sign these certificates. Right? So the certification authority aim is the certification authority will not create or generate the public keys, but it will make easy accessible the signature issue before expiration. We are updating. So next, this update date. That means the date when we have revoked the certificate. That means updated the certificate. So before expiration we are updating. So that particular date. Next update date. So again, once the certificate is revoked, that particular revoked certificate will be also having the period of validity. So after completion of that particular time period, again the revoked certificate will be getting expired. So the next update date. So when we have to update next. User public key info. That means the user public key and the revocation date. Right? So this is about the revoked certificate. So user certificate, revoked user certificate, and this will continue a number of revoked certificates. So at the last, algorithm, parameter, all these. Right? So this is about the revoked certificate. So user certificate, revoked user certificate, and this will continue a number of revoked certificates. So at the last, algorithm, parameters, encrypted code. All these three are in the same field. So this is the revocation list maintained. So this one. Right? The last field is the signature. Right? So this signature is done by using the certification authority private key. So this is about the algorithm which generates the signature, and all these are this is the revoked certificate, and we will maintain all the revoked certificates in this field. So first revoked certificate, second revoked certificate, and so on. Right? So here it consists of serial number, certificate. Serial number. Okay. Next, this is the signature. Signature means the encrypted format, encrypted code. So in the previous session we have seen the unsigned certificate and signed certificate, right? So this is the signature which is appended to the public key information. So hope you understood this revocation list. Revocation list consists of a collection of the public key information. So hope you understood this revocation list. Revocation list consists of a collection of revoked certificates. So when a certificate is revoked, whenever it is going to be expired, then such certificates will get revoked, and it will be added in this revocation list. Right? Hope you understood this revocation list. Now, and X1 is
generated by the certification authority X1. Let it be A is a user and X1 is the certification authority user. So A is generated by XA. XA generates A. So this is denoted as AX1. So A is a certificate which is generated by the certification authority X1. Similarly, let us take X2. Hey guys, welcome to my channel again. In this video, we'll discuss this topic in Hindi. If you want this lecture in English, okay, you will get the link in the description. You can check that. Now let us discuss what is PGP. PGP stands for guys pretty good privacy. ठीक है, जो हम जिसे हम अपना ईमेल भेजते हैं तो उसमें हमारा ये काम आता है. It is a network security concept which will provide us the email security basically, right? So it was invented by Phil Zimmerman in 1990. इवन आपके क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी क्विज वगैरह होती है कॉलेज में तो एक नंबर में अगर कुछ होता है तो वो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी. नाउ इट इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट विच प्रोवाइड्स अस ईमेल सिक्योरिटी, राइट. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. ईमेल सिक्योरिटी से आपका जुड़ी हुई कंसेप्ट है. इसको आप पीजीपी प्रोटोकॉल से भी आपको कहीं जगह पे मिल सकता है नाम, राइट. नाउ इट इज़ एन इंक्रिप्शन प्रोग्राम बेसिकली दैट विल प्रोवाइड, हमें क्रिप्टोग्राफिक प्राइवेसी हमको मिलेगी प्लस ऑथेंटिकेशन भी मिलेगा, राइट. और प्राइवेसी और ऑथेंटिकेशन मिल रहा है तो हमारा जो है डेटा भी सेफ ही रहने वाला है. सो दैट्स वाई इंटीग्रिटी भी मिल जाएगी हमको, डेटा इंटीग्रिटी भी हमको अचीव हो जाएगी. तो ये आपका सिनेरियो है सिंपल सा. तो हम जब जैसे अपना ईमेल भेज रहे हैं तो सिंपली हमारा एन्क्रिप्ट होगा ईमेल, और इस प्रोटोकॉल को यूज़ करके बेसिकली पीजीपी को इसका यूज़ करके हमारा जो है डेटा सेफली ट्रांसफर हो जाएगा. कैसे होगा डायग्राम के थ्रू अभी बताने वाला हूँ मैं आपको. पहले हम थोड़ी सी थ्योरी देख रहे हैं, राइट. नाउ पीजीपी इज यूज फॉर साइनिंग, दैट इज हमारा डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा. कैसा आएगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो इसमें हम लोग अपना साइनिंग भी यूज़ करें. इट यूज फॉर साइनिंग. इंक्रिप्शन हमारा होगा, डिक्रिप्शन भी होगा, टेक्स्ट का कर सकते हैं, ईमेल्स का, फाइल्स का, डायरेक्टरीज का, राइट. एंड टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन बेसिकली. तो बेसिकली हमारा पर्पस इस कंसेप्ट विच इज कॉल्ड दी पीजीपी एल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे हैशिंग का कंसेप्ट भी यूज होगा. आपका डेटा को हम कंप्रेस भी करने वाले हैं यूजिंग अ जिपिंग एल्गोरिथम, राइट. आगे पता चलेगा क्या होता है. फिर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी इसमें यूज करेंगे और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी हम इसमें पे यूज करने वाले हैं. ठीक है, दोनों तरीके की क्रिप्टोग्राफी यूज करेंगे. एंड ईच स्टेप विल यूज वन ऑफ द सेवरल सपोर्टेड एल्गोरिथम्स. ठीक है, आरएसए हो गया का आइडिया हो गया, कास्ट एल्गोरिथम हो गया, ट्रिपल डीईएस, बहुत सारे एल्गोरिथम हैं गाइस जो हमारे पीजीपी में यूज हो सकते हैं. बाकी आप बुक रेफर करना चाहो तो बुक रेफर कर सकते हो.
नाउ गाइस, सर्विस प्रोवाइडेड बाय पीजीपी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर देता है। ऑथेंटिकेशन मतलब कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को मैसेज रिसीव हो रहा है, तो सामने वाले बंदे ने, सपोज राहुल ने मेरे को मैसेज भेजा है, तो मेरे को पता होना चाहिए कि यस, राहुल ने ही मैसेज भेजा है। उसको हम कैसे अचीव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट। अब गाइस आपको यार नहीं पता ना अगर कि ये डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट की क्या बात हो रही है, हैशिंग क्या हो रहा है, हर एक वीडियो डल चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है पूरा डिटेल में हमें करेंगे, राइट। प्रोवाइड अस द ईमेल कंपैटिबिलिटी और द जिप एल्गोरिथम हम उसको बोलते हैं। एंड पीजीपी विल प्रोवाइड अस द ईमेल कंपैटिबिलिटी आल्सो यूजिंग द रेडिक्स 64 एनकोडिंग स्कीम। अब यार ये क्या होता है, इसमें मैं आपको अभी आगे एक शॉर्ट में बता दूंगा। वैसे इसमें हमारा बेसिकली होता ही है कि अगर आपके पास आपका डेटा है तो उसको पहले हम एस्काई कोड में उसके कन्वर्ट करते हैं, एंड देन उन एस्काई कोड्स के करस्पॉन्डिंग हम 8 बिट्स अपने लिखेंगे, फिर उन 8 बिट्स को हम अपनी 6 बिट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। और उसके बाद हमारा एक टेबल होता है गाइज, बेस 64 टेबल गाइस हम उसको बोलते हैं, फिर रेडिक्स टेबल बोल सकते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा डेटा होता है वहां से हम देखते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारा एक नया सा टेक्स्ट बनता है, ठीक है। उस तरीके से हम उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक होता है रेडिक्स 64 इंक्रिप्शन स्कीम का। सो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा कि बहुत सारे वेरियस एल्गोरिथम यूज होंगे इसमें, राइट। तो कैसे स्कीम का, सो फ्रेंड्स, हमने आपके पास एक ईमेल है, उसको आप हैश कोड में कन्वर्ट करोगे यूजिंग सम एल्गोरिथम्स, जैसे कि आपका एस एच हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर MD5, बहुत सारे एल्गोरिथम है गाइज, उनको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हैश कोड को हम कन्वर्ट करेंगे डिजिटल सिग्नेचर में यूजिंग दी प्राइवेट की ऑफ द सेंडर, यहाँ पे हम अपना RSA एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, या फिर DSA या फिर DSS एल्गोरिथम हम बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम, यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। देन उसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा दोस्तों, और ईमेल को हम लेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, कॉन्कैट करेंगे। देन यहाँ पे हम इसको कंप्रेस करने वाले हैं यूजिंग अ जिप एल्गोरिथम। फिर कंप्रेस करने के बाद आपका एक कंप्रेस्ड आउटपुट आएगा, है ना, कंप्रेस्ड आउटपुट आ गया। इस कंप्रेस्ड आउटपुट को यार हम फिर से जो है इंक्रिप्ट करने वाले हैं, बट इस समय इंक्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन यूज करेंगे, जिसमें कि एक की का आपका कंसेप्ट होता है। तो सिंपली आपकी नॉर्मल सी एस की मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आपकी नॉर्मल एक की होगी, तो उसको हम इंक्रिप्शन करेंगे। बट यहाँ पे हम कौन सा एल्गो यूज करेंगे, कोई सा भी एल्गो यूज हो सकता है, आइडिया एल्गोरिथम यूज हो सकता है, आपका 3DES यूज हो सकता है, कास्ट एल्गोरिथम यूज हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, डिपेंडिंग कौन सा वर्जन हम
हम यूज़ कर रहे हैं गाइस, कोई सा भी आपका जो है एल्गोरिथम यहाँ पे यूज़ हो सकता है, बाकी आप बुक रेफर कर सकते हैं डिटेल के लिए। देन जो इंक्रिप्ट होने के बाद आपका जो यहाँ पे डेटा आएगा, प्लस यहाँ पे जो आपकी सीक्रेट की, आप देखो सीक्रेट की यार कोई आपका यहाँ पे की को चुरा सकता है, तो इस की को भी हम क्या करेंगे, इंक्रिप्ट कर देंगे, राइट। तो इस की को भी हमने इंक्रिप्ट कर दिया यूजिंग सम एल्गोरिथम, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, डेफी हेलमेंट की एक्सचेंज एल्गोरिथम, राइट। तो उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंक्रिप्ट क्या, पब्लिक की इंक्रिप्शन यहाँ पे हो रहा है। पब्लिक की इंक्रिप्शन मतलब जहाँ पे हमारा प्राइवेट और पब्लिक की का कंसेप्ट यूज होता है, राइट। कैसे हो रहा है मैं आपको डायग्राम में डिटेल में समझाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे सपोज हमने आरएसए एल्गोरिथम लगाया, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों का, इसका भी और इसका भी। फिर इसके बाद इसको जोड़ के हम रिसीवर को सेंड कर देते हैं। तो ये तो आपका सिर्फ बेसिक सा मैंने आपको बताने के लिए किया है कि पीजीपी का ना बेसिक फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ ये होता है। अब मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ दोस्तों, विद दी हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम्स।
सो देखिए दोस्तों, बिल्कुल वही सिनेरियो है। पहला केस हम ले रहे हैं, इसमें हमें ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा बट कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिलेगी। तो पहले देखते हैं क्या सिनेरियो है। देखो, मैसेज था, उसको हमने हैश फंक्शन से पास कराया, तो हैश कोड बना। फिर उसके बाद हमने इसको एन्क्रिप्ट कर दिया यूजिंग दी प्राइवेट की ऑफ द सेंडर, पास कराया कॉन्फिडेंशियल। अब मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ दोस्तों विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम्स। सो देखिए दोस्तों, बिल्कुल वही सिनेरियो है। पहला केस हम ले रहे हैं, इसमें हमें ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा बट कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मिलेगी। तो पहले देखते हैं क्या सिनेरियो है। देखो, मैसेज था, उसको हमने हैश फंक्शन से पास कराया, तो हैश कोड बना। फिर उसके बाद हमने इसको एन्क्रिप्ट कर दिया यूजिंग दी प्राइवेट की ऑफ द सेंडर। प्राइवेट की ऑफ सेंडर की यूज कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हमको डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट अचीव हो सके, ताकि हमें पता चले कि यस, ये जो मैसेज है राहुल ही भेज रहा है। अगर ए हमारा राहुल है तो यस, प्राइवेट की क्या होता है, सिर्फ राहुल को ही पता होगी ना अपनी, तो इसीलिए यहाँ पे अपनी प्राइवेट की से अगर इंक्रिप्शन करता है राहुल, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल ही मैसेज भेज रहा है, ये प्रूफ हो चुका है। इसीलिए इंक्रिप्शन हो गया प्राइवेट की से। फिर इसका जो आउटपुट आएगा दोस्तों, और जो नॉर्मल मैसेजेस को तो जो हमारा यहाँ पे क्या होगा, कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों चीजों का, इसका भी और इसका भी। फिर इसके बाद इसको जोड़ के हम प्राइवेट की ऑफ द सेंडर, प्राइवेट की ऑफ सेंडर की यूज कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हमको डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट अचीव हो सके, ताकि हमें पता चले कि यस, ये जो मैसेज है राहुल ही भेज रहा है। अगर ए हमारा राहुल है तो यस, प्राइवेट की क्या होता है, सिर्फ राहुल को ही पता होगी ना अपनी, तो इसीलिए यहाँ पे अपनी प्राइवेट की से अगर इंक्रिप्शन करता है राहुल, तो सिर्फ और सिर्फ राहुल ही मैसेज भेज रहा है, ये प्रूफ हो चुका है। इसीलिए इंक्रिप्शन हो गया प्राइवेट की से। फिर इसका जो आउटपुट आएगा दोस्तों, और जो नॉर्मल मैसेजेस को लेंगे, कॉन्कैटिनेट कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे आपस में। फिर जो इसका आउटपुट आएगा, इसको हम एक कंप्रेशन एल्गोरिथम के थ्रू पास करेंगे। जिप फंक्शन उसको हम बोलते हैं, जिप एल्गोरिथम उसको बोलते हैं, राइट। तो जिप एल्गोरिथम यूज करेंगे, तो कंप्रेशन हमारे यहाँ पे हो गया, साइड पे अपना अचीव कर लिया। नाउ दोस्तों, तो इसको हम लास्ट उल्टा यूज हो या यूजर साइड पे डिक्रिप्शन करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम अपना सिंपल डिक्रिप्शन करने वाले हैं, डिक्रिप्शन यूजिंग पब्लिक की कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट की यूज हुई थी, ए की मतलब राहुल की, अगर आप राहुल मान के चल रहे हो, तो यहाँ पे हम उसकी अब पब्लिक की यूज करने वाले हैं। ठीक है, पी आर मतलब प्राइवेट, पी यू मतलब पब्लिक हो गया। तो यहाँ पे हमने राहुल की पब्लिक, हमारा डेटा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस केस में आपको ऑथेंटिकेशन मिल गई कि यस, राहुल मैसेज भेज रहा है डिजिटल सिग्नेचर को यूज करके। अब दूसरा केस देखते हैं जिसमें हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मिल जाएगी। नाउ दोस्तों, इस केस में हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करने वाले हैं। देखो, नॉर्मल सा आपका मैसेज होगा, इसको आप कंप्रेस कर दोगे। पहले ही आपने मैसेज लिया, उसको कंप्रेस कर डाला। ठीक है, जिप एल्गोरिथम को यूज करके आपने यहाँ पे से कंप्रेशन कर दिया। फिर जो भी आपका आउटपुट आया, इसमें आपने इंक्रिप्शन टेक्निक लगाई। ईसी मतलब क्या है, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन। कन्वेंशनल इंक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही की यूज होती है। ठीक है, जब भी मैं ईपी लिखता हूं, मतलब क्या है कि इंक्रिप्शन यूजिंग पब्लिक की कंसेप्ट, और जहां पे ईसी लिखा है मतलब कन्वेंशनल इंक्रिप्शन या फिर सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, जहां पे आपकी एक ही की यूज होगी इस सिनेरियो में। दैट इज द रीजन, क्योंकि इंक्रिप्शन कर रहे हो दोस्तों, तो आपको एक की चाहिए। तो सपोज वो की आपकी केएस है। ठीक है, केएस यहाँ पे की हो गई। नाउ इंक्रिप्शन किया, केएस की को यूज करके कुछ हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे। बट सिनेरियो ये है यार कि ये की कोई चुरा भी तो सकता है ना रास्ते में, तो इसलिए हम इस की को भी इंक्रिप्ट करने वाले हैं यूजिंग दी पब्लिक की कंसेप्ट। ओके, तो ईपी मतलब आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रिप्शन यूजिंग पब्लिक की। सो हमने की को भी यहाँ पे सिंपली अपना इंक्रिप्ट कर दिया यूजिंग दी पब्लिक की ऑफ यूजर बी। बी को क्यों यूज कर रहे हैं गाइस, मतलब सेंडर की। बी यहाँ पे है ना हमारा, यहाँ पे इंक्रिप्शन यूजिंग पब्लिक की। सो हमने क्या भी तो इस की को यूज करके कुछ हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे। बट सिनेरियो ये है यार कि ये की कोई चुरा भी तो सकता है ना रास्ते में, तो इसलिए हम इस की को भी इंक्रिप्ट करने वाले हैं यूजिंग दी पब्लिक की कंसेप्ट। ओके, तो ईपी मतलब आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रिप्शन यूजिंग पब्लिक की।
सो हमने की को भी यहाँ पे सिंपली अपना इंक्रिप्ट कर दिया यूजिंग दी पब्लिक की ऑफ यूजर बी। बी को क्यों यूज कर रहे हैं गाइस, मतलब सेंडर की, बी यहाँ पे है ना हमारा, तो हमने सेंडर की पब्लिक की सबको पता है, इसीलिए हमने यहाँ पे पब्लिक की को यूज करके इसको इंक्रिप्ट कर दिया। अब क्योंकि पब्लिक की तो हमने यहाँ यूज कर ली, अब जो बी बंदा है मतलब जो रिसीवर है गाइस, उसकी प्राइवेट की तो उसी को पता होगी ना, तो इसीलिए जो है हमारा जो ये इंक्रिप्शन हमने यहाँ पे किया है, तो डिक्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ बी ही कर सकता है। इस तरीके से हमारी की जो है सेफ हो गई है। तो ये हमारा सिनेरियो हो गया है। फिर जो इसका आउटपुट आएगा एंड जो हमारा इंक्रिप्शन करने के बाद जो आउटपुट आया दोस्तों इसका, उसकी प्राइवेट की तो उसी को पता की तो हमने यहाँ यूज कर ली। अब जो बी बंदा है मतलब जो रिसीवर है गाइस, उसकी प्राइवेट की तो उसी को पता होगी ना, तो इसीलिए जो है हमारा जो ये इंक्रिप्शन हमने यहाँ पे किया है, तो डिक्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ बी ही कर सकता है। इस तरीके से हमारी की जो है सेफ हो गई है। तो ये हमारा सिनेरियो हो गया है। फिर जो इसका आउटपुट आएगा एंड जो हमारा इंक्रिप्शन करने के बाद जो आउटपुट आया दोस्तों इसका, तो ये दोनों को हम कॉन्कैटिनेशन करेंगे, इनको जोड़ देंगे आपस में, तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, ये जो की है इन इंक्रिप्टेड फॉर्मेट, ठीक है, जो की हमारी इंक्रिप्ट करी है हमने, प्लस जो हमारा यहाँ पे कंप्रेस करने के बाद जो इंक्रिप्ट करने के बाद जो डेटा बना है, ठीक है, मैसेज हमारा ये हो गया। तो दिस इज द की इन इंक्रिप्टेड फॉर्मेट, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया दोस्तों ई ऑफ पी यू बी कॉमा के एस से, मतलब इंक्रिप्शन ऑफ पब्लिक की यूजिंग बी, ठीक है, पब्लिक की ऑफ बी हमने यूज करी और के एस मतलब हमने यहाँ पे ये वाली की यूज करी है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है, दिस इज ई, कैपिटल ई, पब्लिक की ऑफ बी कॉमा के एस। तो ये आपका सिनेरियो हो गया दोस्तों। नाउ हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो कॉन्कैटिनेशन किया था तो हमारे पास इंक्रिप्शन हमने किया था, ठीक है, तो हमारे पास जो ये पोर्शन है मैसेज का, इसको अगर हम डिक्रिप्ट कर देते हैं, बट डिक्रिप्शन के लिए हमको क्या चाहिए होगा यार, की चाहिए होगी, है ना, इंक्रिप्शन में हमने की यूज़ करी है, तो डिक्रिप्शन में भी मेरे को की चाहिए ही चाहिए होगी। तो इसीलिए इस कारणवश हमको पहले ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब इंक्रिप्शन किया था हमने पब्लिक की से, तो हमको डिक्रिप्शन करने का पड़ेगा, क्या, पब्लिक की से डिक्रिप्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना ये अब इंक्रिप्शन में हमने केएस यूज करी थी, तो अब बंदे इस बी बंदे के पास भी केएस आ चुकी है, इसने भी डिक्रिप्शन यूज किया, कन्वेंशनल डिक्रिप्शन, मतलब सिंगल की हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन यूज हो रहा है, राइट, मतलब डिक्रिप्शन यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इसने इसको की दी, डिक्रिप्शन किया, तो यहाँ पे हमने जो हमारा आउटपुट आएगा, यहाँ पे मैसेज भेज कौन रहा है ना, फेक पर्सन भी भेज सकता है। तो यहाँ पे ऊपर वाले केस में हमको पता चल गया कि यार राहुल भेज रहा है, सिर्फ इतना पता चल पाया यूजिंग व्हाट, डिजिटल सिग्नेचर। नाउ केस 2 जो है, इसमें हमको पता चल पाया कि यस हमारा डेटा यार सिक्योरली हम भेज पा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा है कि यार भेज कौन रहा है, राहुल भेज रहा है कि करण भेज रहा है, ठीक है, ये हमको नहीं पता चल पाएगा। सो इन दोनों अप्रोचेस को गाइस अब हम जोड़ देंगे, ठीक है, केस 1 और केस 2 को, इसके बाद हमारा एक केस 3 निकल के आएगा और इससे हमें कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ दोस्तों थर्ड सिनेरियो देखते हैं। नाउ सपोज दोस्तों आपके पास एक मैसेज है, इसको आपने हैश फंक्शन से पास कराया, तो आपके पास एक हैश कोड बन गया, राइट, छोटा एज। नाउ इसमें हमने क्या किया, हमको बताना है कि यस मैं राहुल हूँ, मैं ही मैसेज भेज रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट की ऑफ राहुल यूज़ करूँगा, राइट, प्राइवेट की ऑफ ए हमारा राहुल है, तो हमने अपनी प्राइवेट की यूज़ करी, तो हमने यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट यूज़ कर लिया, राइट। तो हमने इंक्रिप्शन करते हुए अपनी प्राइवेट की यूज़ कर ली, जो हमारा सेंडर है, अगर हमारा सेंडर ए है, राहुल है, तो उसने भी प्राइवेट की यहाँ लगा दी, तो इससे पता चलेगा कि यस राहुल ही मैसेज भेज रहा है। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन हमने परफॉर्म किया गाइस। ईपी मतलब क्या हो रहा है आपका, पब्लिक की इंक्रिप्शन, मतलब आपकी 2 की कंसेप्ट जहाँ पे यूज होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। हाँ, वीडियोस देख लेना, नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको सब समझ में आ जाएगा अगर नहीं आ रहा है तो।
इसका जो आउटपुट आएगा प्लस मैं मैसेज को लूंगा यार और इसको कॉन्कैटिनेशन कर दूंगा, इनको जोड़ दूंगा आपस में। तो हमारा क्या बनने वाला है, एक तो आपको बुक में ऐसा भी मिल सकता है ई ऑफ पी, राइट, ये आपका सिनेरियो हो गया दोस्तों। तो इसको अब हम कंप्रेस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नेटवर्क में भेजना है तो हमारा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा। तो इसको हमने जिप एल्गोरिथम को यूज करके कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद अब देखो यहाँ तक क्या है, कंप्रेस हमने कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे यार, फिर से इंक्रिप्ट करेंगे ताकि हमारे को कॉन्फिडेंशियलिटी मिल जाए, है ना, ताकि हमारा कोई डेटा जो है यार कोई चुरा ना पाए। तो इसीलिए दोबारा से हम यहाँ पे इंक्रिप्शन का यूज कर रहे हैं। तो सिंपली हमने इंक्रिप्शन कर दिया यहाँ पे, बट उस इंक्रिप्शन के लिए हमको एक की चाहिए होगी, तो यहाँ पे हमने के एस को की मान लिया, राइट। ये गाइस हमारा क्या है, कन्वेंशनल इंक्रिप्शन, मतलब आपका जो सिंगल की क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट होता है, विच वी कॉल एज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या फिर कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी आपका वो होता है। तो यहाँ पे हमने ईसी लिख लिया, ठीक है, ईसी वगैरह मैंने
टर्म्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं नीचे भी आपको सब कुछ दिखा दूंगा, आप फिलहाल बस समझते चलिए। तो हमने की यूज़ करी, इसको इनक्रिप्ट कर दिया, जो इसका आउटपुट आएगा यार इसको हम कॉन्कैटिनेट करेंगे इसी की के साथ, बट ऐसा हो सकता है मतलब यहाँ पे लिखें नाउ इसको यूज़ किया और इसको जो हमारा आउटपुट आया इसके साथ हमने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो हमारा क्या सिनेरियो बना दोस्तों, ये सिनेरियो बन गया कुछ हमारा। इसमें हमारा मैसेज इन जिप फॉर्मेट हमारा ये हो गया, ठीक है, जिप फॉर्मेट में मैसेज ये हो गया है, प्लस ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है दोस्तों ये आपकी इनक्रिप्टेड की है, राइट, जो हमने अभी अभी इनक्रिप्ट करी है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, ई ऑफ पी यू बी कॉमा के एस, ठीक है, बुक में ऐसा मिल सकता है। मतलब क्या है, पब्लिक की ऑफ बी, हमने पब्लिक की ऑफ बी यूज़ करी है प्लस के एस, ठीक है, की हमारी ये है, तो इनको इनक्रिप्ट किया हमने यहाँ पे। तो ये आपका सिनेरियो बन गया, ये आपका था सेंडर साइड। नाउ रिसीवर साइड पे हम देखते हैं दोस्तों, देखो बिल्कुल इसका ना रिवर्स प्रोसेस ही चलेगा। आप देखो सिमेट्रिक डिक्रिप्शन मतलब एक की ही यूज हो रही है। अब है ना रिसीवर भी इसको, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने इसको रेडिक्स 64 फॉर्मेट में कन्वर्ट करा था, तो रिसीवर भी अपने एंड पे इसको रेडिक्स 64 फॉर्मेट को रिवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट, ये सिनेरियो हो गया। कॉन्फिडेंशियलिटी हमको मिल गई, ऑथेंटिकेशन मिल गया। अब यार ये सब जो हमने लिखा है ना पीयूबी केस वगैरह, अगर कोई कंफ्यूज होता है तो मैंने आपके लिए लिख के रख दिया है, आप इसको डिटेल में देख सकते हो गाइस, ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ आप के लिए थोड़ा सा, ठीक है, जहाँ पे भी केस आएगा मतलब आपकी एक की है, सेशन की इसको बोल सकते हैं, यूज इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन मतलब जहाँ पे एक की का कंसेप्ट यूज होता है। पी आर ए मतलब प्राइवेट की ऑफ ए, पब्लिक की ऑफ ए, ठीक है, पी यू मतलब पब्लिक की होगा, ई पी मतलब पब्लिक की इंक्रिप्शन मतलब आपका प्राइवेट और पब्लिक की वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है इंक्रिप्शन वगैरह हमारा, और डी पी होगा तो पब्लिक की डिक्रिप्शन इसको हम बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट की यहाँ पे हमारी यूज होने वाली है मतलब इन डिक्रिप्शन प्रोसेस में। और ईसी मतलब कन्वेंशनल इंक्रिप्शन मतलब आपका सिमेट्रिक इंक्रिप्शन इसको बोलते हैं, एक की ही यूज होगी, यहाँ पे भी आपका उल्टा डीसी मतलब डिक्रिप्शन हो जाएगा सिंपल हमारा, सिमेट्रिक डिक्रिप्शन मतलब एक की ही यूज हो रही है। बड़ा एच मतलब हैश फंक्शन, छोटा एच मतलब हैश कोड, जेड मतलब कंप्रेशन एल्गोरिथम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप जब मैसेज को लिख लेते हो, अपना मेल लिख लिया आपने, मैसेज को जैसे आप भेजते हो ना तो वो एक फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, उसको हम रेडिक्स 64 फॉर्मेट बोलते हैं, मतलब उसको ईमेल कंपैटिबिलिटी बेसिकली हमारी होती है, ठीक है। तो जैसे आपने मैसेज लिखा उसको आप सेंड कर रहे होते हो तो पहले आपका मैसेज यार कन्वर्ट होता है इनटू अ स्पेशल फॉर्मेट जिसको कि हम रेडिक्स 64 एनकोडिंग स्कीम बोलते हैं दोस्तों, है ना। इससे हमारे को ईमेल कंपैटिबिलिटी मिल जाती है, और जैसे ही जो हमारा यहाँ पे डिक्रिप्शन हो रहा है और जैसे ही हमारा सब कुछ प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा रिसीवर है ना, रिसीवर भी इसको, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने इसको रेडिक्स 64 फॉर्मेट में कन्वर्ट करा था, तो रिसीवर भी अपने